Most of you all might be thinking of taking admission in physiotherapy. So what is exactly the cutoff for physiotherapy? Is it high, it is low, or what is the cutoff for government colleges? How many government colleges are there? What is the fee structure? Private colleges का क्या fee structure है, उसका क्या cutoff है? And hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's Simardeep Kaur Sahani this side, yours truly, the Physiomedic. So yes, I'm back with yet another series of counseling related videos. So in this video, I'll be telling you all about the NEET UG cutoff for physiotherapy students in Maharashtra. As you all know, NEET is around the corner and most of you all might be looking for the cutoff for physiotherapy. So yes, I'll be telling you all the cutoff for government as well as private colleges in Maharashtra. So I will be guiding you all throughout this NEET counseling series. So do make sure that you all subscribe to my channel so that you all stay tuned with each and every updates related to counseling or NEET UG or the cutoff or the admission process and everything. So make sure that you all have subscribed to my channel. And I'll make sure that I'll provide you all the content and every information that you all need in your counseling process till you get admission in your desired college. So yes, so let's get started. So as you all know कि MBBS के कट ऑफ की वीडियोस आपको हर जगह मिल ही जाते हैं, but most of you all might be thinking of taking admission in physiotherapy. So what is exactly the cutoff for physiotherapy? Is it high, it is low, or what is the cutoff for government colleges? How many government colleges are there? What is the fee structure? Private colleges का क्या fee structure है, उसका क्या cutoff है? So starting with government colleges. So जैसे कि महाराष्ट्र में you all might be knowing that there are only 4 government colleges in Maharashtra for physiotherapy. So obviously cutoff for government colleges of physiotherapy will be high in Maharashtra. Mumbai में there are 3 government colleges for physiotherapy, that is Lokmanya Tilak Medical College of Physiotherapy, Seth GS Medical College and Topiwala National Medical College. So as you all know, these 3 are the top government colleges in Mumbai. So obviously इनका cutoff तो high होगा ही, and it is obviously more than 450 plus. So if you are aiming to get admission in these 3 top medical colleges in Mumbai, then you all have to score 450 plus from open category. 450 plus was the cutoff for last to last year's students. This year this might increase to 470 or 480. So be prepared, and if you all score 500 or 500 plus, then you all can get easily into these colleges. So yes, so as I said, these 3 are the top colleges in Mumbai, that too government colleges for physiotherapy. So yes, so you all have to score anywhere about 470 plus or 480 plus or maximum 500 to easily get into these colleges if you are from open category. OBC students, the cutoff might be around 400 plus or 420 plus. This might also increase to around 430 somewhere. So 400 plus will be a safe score for OBC students. For EWS students, again you all have to score 450 plus because there is not much difference between the open category and EWS. So you all need to score around 450 plus for EWS category. For ST and SC categories, as you all know, the seats are very less in these government colleges. तो ST और SC category के लिए भी जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा होता है. So 350 plus 400 plus will be a safe score because जो number of seats है वो बहुत कम है, तो competition obviously ज़्यादा होता है. तो अगर आप ST SC category से भी हो तो आपको around 350 plus और 400 plus तो score करना ही है, so that you all get easily into these colleges. So yes, so this was it for the top 3 government colleges in Mumbai for physiotherapy. So if you are looking to get admission in the first round itself into these colleges, then I would suggest that you all should aim for 500 plus. Then you all will be at a safer side. So yes, so 500 plus is the score that I would suggest is a safer side for physiotherapy into these government colleges. One more government college that we have in Maharashtra is GMC Nagpur. So जो GMC Nagpur का जो कट ऑफ है वो स्लाइटली थोड़ा सा कम हो सकता है. So open category के लिए 350 plus 400 plus would be a safer score, while for OBC students also 300 plus would be a safer score, and EWS and open category is the same. So I would suggest कि you all should aim for 400 plus 420 plus if you are looking for GMC Nagpur. This might also increase, it depends, but I would suggest if you have 400 plus or 420 plus, then you all might get into GMC Nagpur.
This was the cutoff for top 4 government colleges in Maharashtra for physiotherapy. So yes, I would suggest that you all should aim for 500 plus, 450 plus, so that you all get into these colleges in the first or second round itself. So yes, so this was an approximately idea of how much you all can score to get into government physiotherapy colleges in Maharashtra. नाउ कमिंग टू प्राइवेट फिजियोथेरेपी कॉलेजेस इन महाराष्ट्र. सो जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस टू, क्योंकि सिर्फ 4 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है और वहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं. सो पीपल गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस टू. तो इसके लिए प्राइवेट कॉलेजेस का भी कट ऑफ हाई होता है फिजियोथेरेपी के लिए, एंड इट डिपेंड्स ऑन द एरिया कि कहाँ पे है आपका प्राइवेट कॉलेज and everything. So everything matters in private colleges. So depending on the area, the institute, or where the location of the college is, the cutoff for private colleges also differs from area to area or facilities. So yes, so I'll be telling you all कि कौन से area में आपको higher cutoff मिलेगा and where you all can get a low cutoff. So if you all are looking for private physiotherapy colleges in Mumbai itself or Navi Mumbai, then its cutoff is going to be higher, almost same as around the government colleges. So 400 plus will be required to get into private colleges in Mumbai. So as you know, Mumbai is a prime location and a growing location for physiotherapy. So the patients का flow जो होता है and the understanding in patients is more in this locality. So इसलिए यहाँ पे जो colleges है, mostly students look for private colleges if they are taking in Mumbai. So यहाँ पे इसलिए जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है. So 400 plus for open category would be a safe score. And if you're looking for topmost physiotherapy colleges in Mumbai, then the cutoff might go to 450 plus too. For example, KJ Somaiya, it is one of the best private colleges for physiotherapy in Mumbai. So उसका cutoff might go to 450 plus or 460 plus. So if you are from open category and looking for admission in KJ Somaiya in Mumbai, then you all have to score 450 plus. BC category you all need to score 350 plus, and for EWS as well. While for SC and ST you all can score around 300 plus or 320 plus to get into the top colleges in Mumbai, that is private colleges. While the rest of the private colleges in Mumbai and Navi Mumbai, for example, if you look at MGM, Terna, YMT, Lokmanya Tilak और सिया, सो इनका भी कट ऑफ जो होता है 350 प्लस और 300 प्लस तो जाता ही है. And with the increasing competition, 350 plus would be a safe score for open students. So yes, I would suggest if you are looking for private physiotherapy colleges in Mumbai or around Mumbai, that is Navi Mumbai, Thane, then you all have to score 350 plus so that you all are at a safer side and you all might get admission in the first or second round itself. Now the second best location for private physiotherapy colleges is Pune, and where you will find one of the best physiotherapy colleges in Maharashtra, that is Sancheti. तो जो संचेती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो उसका कट ऑफ है उसका भी 400 प्लस जाता ही है, एज इट्स दी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर फिजियोथेरेपी इन महाराष्ट्र. सो जो संचेती का कट ऑफ है वो अराउंड 457 होता है, मतलब लास्ट ईयर था, तो इट माइट इंक्रीज दिस ईयर. सो 470 480 तक भी जा सकता है कट ऑफ फॉर ओपन स्टूडेंट्स. सो येस, आई वुड सजेस्ट अगर आप संचेती के लिए एम कर रहे हो विच इज़ इन पुणे, देन यू ऑल हैव टू स्कोर 450 प्लस. For EWS 350 plus and for OBC 300 plus would be a safe score. STSC के लिए anywhere 150 plus 200 plus you all might get admissions, but as you all know the competition in physiotherapy is also increasing, so इसका भी cut off increase हो सकता है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर आप प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाहते हो और अगर आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस में चाहिए, देन यू ऑल हैव टू स्कोर एज मच. आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्कोर करना पड़ेगा, उतना ही आपको प्राइवेट के लिए भी स्कोर करना पड़ेगा. सो 450 प्लस वुड बी अ सेफ स्कोर अगर आप टॉप कॉलेजेस के लिए देख रहे हो. To rest of the colleges in Pune, you all will find number of physiotherapy colleges in Pune, जैसे कि CMF, Modern, Mimer. So इनके लिए जो open category का cut off है वो around 350 plus 300 plus होता है. And if you all have chances, then you all can get into 250 plus too. So yes, so I would suggest कि अगर आप ये सब कॉलेज में देख रहे हो तो you should aim for 300 plus और 350 plus, so that आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ईजिली मिल जाए और आपको थर्ड फोर्थ या स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वेट ना करना पड़े.
So yes, this will be the cutoff for open students. For OBC and EWS, anywhere around 200 plus or 250 plus would be a safe score. सो येस दिस वॉज इट फॉर द अदर कॉलेजेस इन पुणे. सो मैंने आपको अब तक जितने भी कॉलेजेस बताए हैं इनका कट ऑफ हाई ही होता है. सो अगर आप ये सब कॉलेजेस में से अगर किसी में लेना चाहते हो एडमिशन, तो यू ऑल हैव टू स्कोर 350 प्लस 400 प्लस और 450 प्लस टू बी ऑन अ सेफर साइड, सो दैट यू ऑल डोंट हैव टू लुक फॉर एनी अदर ऑप्शंस एट द एंड मोमेंट. सो अगर आप ये सब कॉलेज में लेना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट एम फॉर 400 प्लस एंड यू ऑल आर एट अ सेफर साइड. सो येस दिस वॉज इट फॉर दी टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस का कट. कमिंग टू, अगर आपका नीट का स्कोर कम आता है या फिर आपको ऐसे टॉप कॉलेजेस में नहीं चाहिए या फिर आप कुछ और लोकेलिटी में ढूंढ रहे हो फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस, सो यू ऑल विल फाइंड फिजियोथेरेपी कॉलेजेस इन महाराष्ट्र इन जलगांव, अहमदनगर, रत्नागिरी, सातारा, सोलापुर, जलगांव, बीड, उस्मानाबाद. सो आपको ये सब जगह पे भी जो फिजियोथेरेपी कॉलेजेस है वो मिल जाएंगे जो एफिलिएटेड टू महाराष्ट्र है, और उनका कट ऑफ भी कंपेरेटिवली बहुत कम होता है. जैसे कि आपको 100 प्लस या फिर 150 प्लस में भी ईजिली इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है. बट ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है इसका लोकेशन जलगांव, सातारा, ये थोड़े से विलेज एरियाज पड़ जाते हैं, तो जो पेशेंट का फ्लो और जो पेशेंट्स का एडुकेशन रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी इतना नहीं होता, तो आपको मे भी वहाँ पे इतना एक्सपोजर टू फिजियोथेरेपी नहीं मिलेगा. बट इफ़ यू ऑल आर लुकिंग टू टेक एडमिशन्स इन सच एरियाज, यू ऑल कैन ट्राई फॉर दीज कॉलेजेस. सो मैं आपको हर एक कॉलेज कौन से एरिया में है और उनका एग्जैक्ट फ़ी और एग्जैक्ट कट ऑफ आगे वीडियोस में बताऊंगी. सो मेक श्योर दैट यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो अगर आपका नीट का स्कोर लो है और अगर आपका स्कोर है अराउंड 100 और 150 और समटाइम्स यू ऑल माइट गेट एडमिशन इन 50 प्लस टू इनटू दीज कॉलेजेस बिकॉज ऑफ द लोकेशन. सो येस, सो दीज आर द कॉलेजेस जहाँ पे आपको लो स्कोर में भी एडमिशन मिल सकता है. This video I have given you all a rough approximate idea of what can be the cutoff for government and private physiotherapy colleges in Maharashtra. So जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइम लोकेशंस का ज़्यादा होगा और जो एरियाज़ हिली एरियाज़ है या फिर विलेज एरियाज़ है वहाँ पे कम होगा कट ऑफ. सो जो एग्जैक्ट कॉलेजेस के नेम है अलॉन्ग विद इट्स एग्जैक्ट कट ऑफ एंड फी स्ट्रक्चर, आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दीज टॉपिक्स टू सून एंड विल बी अपलोडिंग ऑन माई चैनल. सो मेक श्योर दैट यू ऑल स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज़. And I hope by this video you all might have got a rough idea of what should be your aim to score in NEET 2024, so that you all get into your desired physiotherapy colleges easily in the first and second round. So that was it for NEET UG physiotherapy cutoff video, and I hope that by now you all have got an estimate or rough idea of how much you all should score and what should be your strategy for NEET 2024. So I wish you all all the best for your NEET 2024, and I hope that you all do good and get into your desired colleges. And obviously I will be along with you to help you all in your counseling process too. See you all in the upcoming videos where I will be explaining in detail about each and every college in Maharashtra for physiotherapy along with its proper fee structure. Should you all take that college or not? What is the pros and cons of taking into that college and its cut off and everything. So make sure that you all have subscribed and turned on your bell icons. So yes, so meet you all in the videos ahead. And if you all have any doubt related to the cut off of any college or any college, if you all are confused about कि whether ये अच्छा है या नहीं, या फिर यहाँ पे एक्सपोजर कैसा है, यहाँ पे पढ़ाते कैसे हैं, and anything that you all can then you all can ask me in the comments anytime, or you all can DM me on my Instagram, that is the Physiomedic. I am always there to answer you all. So yes, so see you all in more videos ahead, and till then stay tuned. All the best. Bye.